Welcome to SAP Part 3. Today we discussed SAP Material Management. This is the landscape, guys. It's just what I can say, just a diagram. Okay, so there is a client. Okay, client क्या होता है कि जब सपोज वी आर द कंसल्टेंट्स, ठीक है, हम कंसल्टेंट है और XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे पास आई और वो बोले कि हमें भाई हमें इम्प्लीमेंट करके दो SAP इन योर और इन सिस्टम। ओके, तो क्लाइंट हमें क्या करना पड़ता है, एज अ क्लाइंट हमें ये करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है SAP लैब से। ठीक है, एसएपी लैब जो कि एसएपी ओनर कंपनी है, उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है हमें। ठीक है, एंड फिर यो क्लाइंट देन वो ये इट इज आल्सो टेक्निकल थिंग्स, वेब सर्वर, प्रॉक्सी, वेब सर्वर, ये माई एसएपी आरपी सिस्टम। ओके, ये जो लैंडस्केप है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये दिया है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस एंड ऑल दैट थिंग्स, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की। और मैंने ऑलरेडी लैंडस्केप डिस्कस किया था, ये वाला, दैट प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस लेयर। Okay, so that is a landscape thing. Okay, let's now, so we'll discuss what is MM in detail, and then we will discuss all modules. Okay, like overview of our course content. SAP MM, material management. Now first thing, guys, material management comes under logistic. Okay, now you can see in the PPT, you can see MM is the part of logistic which helps to manage end-to-end procurement and logistic business process, requisitioning to payment, including first one MM procurement process, okay, which is a what we can say, it's a heart of MM, we can say. Then inventory management, invoicing, inventory management in the sense what? Good receipt, okay, to handling the stock at correct premises, to maintain the stock at correct premises, like that. Then next is invoicing. Now invoicing here, no question arises. We are dealing with MM. That invoice comes under accounts payable, or we can say account receivable and all that things. Okay, yes, but we have a logistic invoice verification, guys. Okay, we have to verify invoice against cost, quantity, and quality. Okay, that we'll discuss in detail. No problem at all. Then valuation and account assignment, material valuation part. Okay, then material requirement planning, that is a MRP, okay, which is a MMPP integration, we can say. Then reporting, okay, there is a standard reports in SAP. Okay, so that SAP reports we need to discuss in that particular module. Now this is the broadly that syllabus जो भी है, procurement process, inventory, ये जो है, ये broadly defined है, guys. Okay, so material management module, we are dealing with the procurement process, procure to payment. Okay, procure to payment process, we are dealing with the procure to payment, you can say P2P cycle, procurement cycle, procure to payment cycle. Okay, now let's discuss the course content one by one. This is the MM broadly जो points है, यही इसी में हमारा जो टोटल कोर्स कंटेंट है वो डिवाइड हुआ है. ओके, now SAP second module, that is a basic concept of SAP MM. Now basic concept in the sense what? First we will discuss enterprise structure. Now SAP in that module, module number 2, this module will give you the information about the other modules as well. Okay, module in the sense what? SD, FI, WM. Okay, now yes, we are going to learn MM. हम MM learn करने वाले in detail, but as a MM consultant हमें दूसरे जो module है like FI है, then SD है, okay, then WM है, which is a warehouse management. Okay, FI, that is a finance and controlling, SD sales and distribution, ये इसका overview हमें पता होना चाहिए. ठीक है, there is a basic concept of SAP MM, then basic of MM, FI enterprise structure, basic of FISD, उसका enterprise structure. Okay, now SAP MM जो enterprise structure है वो हम practically create करेंगे in server, in SAP server. SAP MM enterprise structure क्या होता है, guys? That is the first step. That is the first chapter, you can say. SAP MM enterprise structure, which runs the business, which represent an enterprise in an organization.
आपको पता है कंपनी होती है, कंपनी के अंडर प्लांट्स होते हैं ना, वर्कशॉप प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंडर स्टोरेज लोकेशंस होते हैं, फिर वी आर डीलिंग विद द प्रोक्यूरमेंट, तो परचेसिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। इसमें परचेसिंग डिपार्टमेंट में कौन काम करता है, परचेसिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, बायर होते हैं, ग्रुप ऑफ बायर होते हैं, वो एज अ परचेसिंग ग्रुप हम यहाँ पे देखेंगे। Okay, so obviously we will discuss in detail one by one organization. That means what? Company code means what? उसकी official definition क्या है? Plant क्या है? उसकी official definition क्या है? ये enterprise structure हमें सेटल करना पड़ता है। Now ये क्यों करना पड़ता है? जैसे कि मैंने बोला एसएपी में काम क्या होता है वो डिस्कस करते हैं हम एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आएगी आगे। फॉर एग्जांपल वी आर द कंसल्टेंट्स, ठीक है, हम एसएपी एमएम कंसल्टेंट है, एंड नेक्स्ट लाइक व्हाट वी कैन से XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो हमारे पास आई, वी आर द आईटी गाइस, ओके, आईटी कंपनी में हम एमएम कंसल्टेंट है, एंड वो हमारे पास आए, वो बोले हमें इंप्लीमेंट करके दो, हमें एसएपी और इंप्लीमेंट करना है गोइंग फॉरवर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वहां पे ये जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है ये सेट करेंगे सिस्टम में, किसका, उस XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उनके कितने कंपनी कोड्स है, उनके कितने प्लांट्स है, उनके कितने स्टोरेज लोकेशंस है, उनके कितने परचेसिंग डिपार्टमेंट्स है, वो सब सेट करेंगे पहले सिस्टम में। आफ्टर दैट ओनली आप बाकी के प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट हो, स्टोरेज लोकेशन हो, परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें एक दूसरे से असाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम एसएपी एमएम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में देखेंगे, विच इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसएपी एमएम, ठीक है। अभी ये हुआ एमएम का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अभी एमएम के लोग क्या है, वो परचेसिंग के साथ डील करते हैं, तो इसलिए परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाउ जो एफआई के लोग हैं, दे आर डीलिंग विद द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट सेंटर्स एंड ऑल दैट थिंग्स, तो उनके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में प्रॉफिट सेंटर है। देन उसके बाद ये एसडी वाले लोग, एसडी वाले सेल्स डिपार्टमेंट के साथ डील करेंगे, तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और ये चीजें हैं। MM deals with the purchasing organization and SD deals with the sales organization, सिंपल। उसके बाद ये वेयर हाउस वाले बंदे, वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस नंबर, स्टोरेज बीन, स्टोरेज सेक्शन, उसके साथ डील करेंगे, तो ये एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। तो लाइक दैट ये बेसिक आइडिया है फॉर ईच मॉड्यूल। ऑब्वियसली एमएमएम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इन डिटेल हम देखेंगे, बट अदर जो मॉड्यूल्स है कल नहीं देखेंगे, जस्ट ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, बिकॉज यू शुड नो द बैकग्राउंड, यू शुड नो द ओवरव्यू। दैट इज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर 2. Part 4 to be continued. Thanks for watching. Bye bye.